So let me quickly revise why we are doing this session. हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं एक बार फिर से जल्दी से याद दिला देता हूँ. This session is for those who are targeting AILET. ये AILET के लिए, और AILET में approximately कितना टाइम बच गया? About 20 days, right? Today is what, 17th? तो 17th है आज, और आपके पास about 20-21 days है. तो 20-21 दिन में काफ़ी चीज़ें improve हो सकती हैं. If you are targeting AILET, you can still improve a lot of things. And this session is part of the crash course which we are doing for AILET. In case you do not know, we are doing crash course free of cost for those of you who are watching us on YouTube. These sessions are free. You can watch the previous sessions also. जो session हो चुके हैं उनको भी देख सकते हो, है ना? And we are doing it for CLAT also. So this session is for AILET, but ये session आप अगर CLAT दे रहे हो तो आपके लिए भी equally important है. Okay. So what are we going to do in this session? In this session, we are going to understand how to tackle assumption questions and how to tackle conclusion questions. Okay, very interesting questions we will do. The session is not going to be very long. Session छोटा है, but बहुत important questions हैं. तो आखिरी तक देखना है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, right? And of course, this session will help you improve your scores. Okay, that is the whole idea. Remember, guys, you have done enough classes with us. तो class करवाना या concept समझाना is not my focus today. मेरा फोकस बड़ा सिंपल है कि आप जो गलतियां करते हो वो गलतियां कम हो जाए और स्कोर इम्प्रूव हो जाए, है ना? तो एक बार जरा चेक कर लें फिर से. कोई चैट में कुछ कह तो नहीं रहा? वॉइस इज ऑल ओके? प्रियंका, वोकैब के लिए तो आपको वोकैब के सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे. वी हैव डन इनफ सेशंस. अगर उनको कर लो तो शुड बी गुड इनफ. ओके, ऑलराइट, चलो, वॉइस इज ऑलराइट. नाउ listen to me very carefully. If you look at AILET 2020 paper, 22 paper, AILET 2022 paper was different. I hope you know, है ना? 50 questions were there from English and 70 questions were there which had critical reasoning plus verbal reasoning और verbal logic plus legal reasoning also, है ना? ये सारी चीजें इसके अंदर ही आ गई थी. This is what they did last time. And there was no sectional cutoff. तो आप किसी भी सेक्शन से स्कोर करके अपना काम चला सकते हो. नो प्रॉब्लम देयर. ओके, नाउ इंग्लिश you have discussed in other classes. We will discuss in other classes, not today. I am focusing on the 70 questions in the critical reasoning, verbal logic and legal reasoning section. Legal reasoning में touch नहीं करूंगा. You know that legal reasoning of course is a different section altogether. तो हम touch नहीं करेंगे. Now if you look at 2022 paper of AILET, critical reasoning had 27 questions. Critical reasoning means small passage questions based on the passage, correct? So this is critical reasoning. So what is verbal logic? Verbal logic questions are essentially questions which are like, you know, syllogism. Last year AILET had around 14-15 questions from this chapter only. तो syllogism काफी important था last year. Will it be important this year? I don't know, but your job is to prepare. ढंग से करके जाना. Questions moderate to difficult आए थे. Syllogism was not an easy chapter in or easy questions in the AILET paper. Questions were moderate to difficult. So syllogism जरूर करके जाना. We have done sessions on syllogism also. उनको देख लेना, उनको मत मिस करना जरूर से. And verbal logic also had one-liner questions. Okay, one-liner questions. They are also known as verbal logic. तो critical reasoning के 27 questions थे. Syllogism और one-liner मिला के 25 questions, 52 questions आपके यहाँ से बन रहे थे. Now, if somebody is planning that I will crack AILET without doing critical reasoning and verbal logic, then I hope you know that it is practically impossible to do it unless of course you are our very own Rajnikant sir or something like that. थोड़ा मुश्किल है that you crack the paper without critical reasoning or verbal logic. बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा. तो इस पर ध्यान दे देना. Syllogism if you have not done, please do it. In case they ask it this year also, then it would be a good source of scores. 14-15 questions from one topic is unheard of, right? So they might not repeat it. Remember guys, they might not repeat it. They might not ask you syllogism at all, or they might ask you some questions. So prepare
very important. We are not touching syllogism today. We will focus on critical reasoning. We'll focus on critical reasoning and why and what kind of questions. I'll show you that also. So if you look at the paper, 2022 AILET paper, in the 27 questions of critical reasoning, 13 questions were assumption and 9 were conclusion and 3 were inference. So actually out of these 27 questions, 25 questions were basically assumption, conclusion or inference. Now just imagine everybody, conclusion and inference, practically 50% of the critical reasoning section. सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन 50%. कितना यकीन है एलेट को, देखो इन क्वेश्चंस पे कितना प्यार है, ये जो सम्मान मिला है ना assumption conclusion को, unheard of. Just imagine if you were writing AILET last year and you were a student with good command of conclusion, good command of assumption and good command of syllogism. You could practically do 25 questions here, 15 questions here, 40 तो यहीं से हो गए. More than half, not more than, approximately half the questions required for the cutoff you could have done from 3 topics. 3 टॉपिक से आधा कट ऑफ पार. अभी बाकी तो लीगल रीजनिंग बचा है, इंग्लिश का पूरा सेक्शन बचा हुआ है और बाकी क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं, राइट. नाउ विल दे रिपीट इट दिस ईयर? आई डोंट नो, maybe not, but what's the harm in being prepared? I hope it is clear everybody why we are focusing on conclusion assumption, but will they do it? I don't know. AILET is never ever famous for repeating questions or even repeating pattern. They keep on experimenting. I respect AILET papers a lot, because AILET is very experimental. नई नई चीजें करना उनका शौक है, कुछ भी करते रहते हैं. So you might get a very different paper this year, but तैयारी तो करनी पड़ेगी, correct? Okay, direction, yes, blood relations, those are one liners and they are generally manageable, है ना. मुझे तो काफी अच्छा लगता है सॉल्व करना उनको, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस वो होते हैं. Okay, so as I said earlier, the focus is not teaching you these things. You guys have done 1300 400 classes with us already. You have done a million questions with us already on these questions type, how to do them, how to deal with them, how to approach them. You know all that. You guys are smart enough, right? वो तो हमें पता ही है. But my job is of course to tell you how to do it when it comes in the actual paper. Okay, तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. Assumption का क्वेश्चन है guys. Quickly solve it and tell me the answer. I will wait for about 1 minute. फिर मैं आंसर रिवील कर दूंगा. और on a scale of 10, this question is around 5.5 or 6, यानी काफी डुएबल क्वेश्चन है. आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू टेल मी द आंसर इमीडिएटली. कुछ छुप तो नहीं रहा, तो एक बार जरा देख लेते हैं कि कैन यू गाइज सी एवरीथिंग प्रॉपरली और नॉट. ओके, मैं काफी वृहत आकार में बैठा हूं, थोड़ा छोटा हो जाता हूं सो दैट यू गाइज कैन सी मी, नॉट सी मी, सी द क्वेश्चन, है ना. वैसे तो अभी मैं दिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाता हूँ. नाउ आई थिंक यू गाइज कैन सी द क्वेश्चन ऑल्सो, है ना, क्लियरली. चलो भाई, अब बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइज, आई नो यू गाइज ऑफ कोर्स बीन डीलिंग विद यू गाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई नो तुम लोगों के लिए काफी डुएबल क्वेश्चन है, बट हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है एक्चुअल पेपर में. इफ यू स्ट्रगल विद assumption क्वेश्चंस तो कैसे करेंगे एक्चुअल पेपर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी के अभी. सृष्टि, यस बिल्कुल. सृष्टि से आप क्वेश्चन भी करते हो, काउंट भी करते रहते हो, बिल्कुल बहुत जरूरी है. जल्दी से बताओ आंसर एवरीवन. I will ask the computer जी only when you guys have given me the answer, no? तभी तो कंप्यूटर जी बताएंगे आंसर. चलो लेट मी सी. हरिओम, बी, अलिफिया, सी,
ग्लैमिफाइड बी, आर्या सी, उमेर सी, राखी बी, खुशबू बी, अस्मिता सी, अनिल सी, सृष्टि बी, सूरज बी, साक्षी सी। तो लड़ाई चल रही है बी और सी में। कंप्यूटर जी कृपया बताएं आंसर क्या है। वैसे बच्चे तो बी और सी के बीच में फंसे हुए हैं, बट कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि देखो आंसर तो लेट्स सी क्या है ना। तो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ सम ऑफ यू वुड बी वेरी सरप्राइज्ड, कुछ लोग हो सकता है बहुत तकलीफ हुई होगी, कुछ लोगों का मन कर रहा होगा अरिजीत सिंह के गाने सुनने का, विच इज टोटली फाइन। नाउ when your paper is 20 days away, if you are not able to solve this question, which is moderate, not difficult, then I think you guys need to take note and be a little more careful, right? You should work on your approach. तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली गलती क्यों हो रही है, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी डुएबल है। तो अगर तुम्हारा आंसर रॉन्ग आया है तो मेरे थोड़ी सी थोड़ा सा मेरे बातों को ध्यान से सुनना, ओके? थोड़ी और मेहनत बढ़ानी है, बट आई विल हेल्प यू विद द अप्रोच। इफ यू नो द राइट अप्रोच, if you know the right approach, you can do this question in like 30 seconds. If your approach is not right, you will get this question wrong. मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, ओके? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। I will not explain like this obviously every question, but I'm just building the base, so I'm talking about the approach right now, okay? I hope you can see. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखेगा सबको? चेक कर लेता हूँ, दिख जाएगा। देखो, please remember everybody, if you are solving an assumption question, okay, if you're solving an assumption question, step number one is always find the conclusion. Always find what is the author's main point. Where is the author's main point? Okay, number one. Number two, after you have found the conclusion, second number is that always look for new terms in the conclusion. Conclusion में नए terms ढूंढो, conclusion में नया क्या है देखो। For example, आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो and you would see the paragraph towards the end talks about reducing brain tissue helps the animal to use less energy. Author is connecting brain tissue with less energy. Author is talking about a new thing. What is a new thing? ब्रेन टिश्यू को कम करने से एनर्जी कम लगती है, करेक्ट? ब्रेन टिश्यू को वो रिड्यूसिंग ब्रेन टिश्यू से एनर्जी कम लगता है। Author is talking about brain tissue reduction and less energy consumption. Look at the new term. And third step is look for these new terms in the assumption option. पहले ढूंढो कि किस ऑप्शन में इस नए टर्म की बात हो रही है। You may not find the exact same word, but something similar. Okay, reducing brain tissue and less energy. Is option A talking about it? Bakwas. Is option B talking about it? Moles can withstand heat better than they can withstand cold. Main focus is on reducing brain size. It's not the conclusion at all कि मोल क्या अच्छा बर्दाश्त कर सकता है, किसे आसानी से बर्दाश्त कर सकता है. That's not the point. The new term has nothing to do with this. But smaller brain is being talked about here. Once you have found it, pay attention. Once you have found it, एक बार ये मिल जाए ना तो क्या करना है? Use negation trick. Okay? Use negation trick. If you have been a regular student of mine, you know all this. But अगर नहीं भी क्लासेस की हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देखना. फिर negation trick यूज करो. negation trick क्या है? Add a not. इसमें एक नॉट लगाओ और फिर देखो क्या ये कंक्लूजन को अटैक कर रहा है. स्मॉलर ब्रेन्स डू नॉट यूज लेस एनर्जी. अगर छोटा ब्रेन एनर्जी कम यूज नहीं करता तो ये वाली बात तो पूरी झूठी हो गई ना. रिड्यूसिंग ब्रेन टिश्यू हेल्प द एनिमल यूज लेस एनर्जी. अगर छोटा दिमाग कम एनर्जी नहीं यूज करता है तो रिड्यूसिंग ब्रेन टिश्यू कैसे हेल्प करेगा? कंजर्व एनर्जी. दिस एंटायर थिंग बिकम्स वीक, false, contradicted, weakened. Yes or no? If it is weakening the argument after adding not, then this assumption is correct. And that's exactly what is happening in this question. Therefore, the correct answer is C. So I'll repeat. Conclusion ढूंढो. Conclusion में नई बात क्या है देखो. वो नई बात किस ऑप्शन में है देखो, या उससे मिलता जुलता कुछ.
फिर उसे निगेशन करके देखो, नॉट लगा के देखो, इज इट अटैकिंग द मेन आर्ग्यूमेंट, इफ यस करेक्ट आंसर है। यू कैन डू ऑल दिस इन 30 सेकेंड्स। तुम्हें ज्यादा लगेगा, अभी तुम्हें लगेगा यार इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एग्जाम में, हाउ कैन आई डू इट इन एक्चुअल पेपर, आई वोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। बकवास, यू विल हैव इनफ टाइम। प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी। करेक्ट। भवेश मिश्रा, नो, moles can withstand heat better than they can withstand cold. We have no information about it. Correct. Don't assume things on your own. Where is the information? Inference के लिए information चाहिए, inference ही पूछूंगा अभी, don't worry. Okay, understood everyone? चलो भाई अगला सवाल आ गया आपके सामने, और मुझे चाहिए जल्दी से आंसर। जल्दी से बताओ आंसर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑन अ स्केल ऑफ 10 दिस इज 5। तुम लोग के लिए लड्डू है, आराम से कर लोगे। जल्दी बताओ आंसर। Techno wizard, you are focusing on unimportant details. Brain tissues make up the brain, right? So if you have less number of tissues, you will have a smaller brain size. That's interconnected. And that's not even relevant there. सूरज खत्री, अगर अभी तक आप निगेशन नहीं लगा पा रहे हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत है। दैट्स ऑल आई कैन से। ज्यादा टाइम तो बचा नहीं एक्चुअल पेपर के लिए, है ना। तुम्हें अगर बी में भी निगेशन लगाने की जरूरत है तो अजम्पशन का टॉपिक ठीक से कर लो। दैट्स ऑल आई कैन से। 20 डेज बिफोर द पेपर अगर आपको ऑप्शन बी पिछले क्वेश्चन में निगेशन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर अजम्पशन का टॉपिक एक बार रिवाइज कर लो, बहुत जरूरी है। ओके। निखिल सेज व्हाई डोंट यू अपलोड वीडियोस एवरी डे सर। क्या बात निखिल, मतलब इतने सारे वीडियोस हम करते हैं, क्लासेस लेते हैं, तब तो इतने हमारे लाइक्स आ नहीं रहे जितने आने चाहिए। अभी भी देखो कितने कम लाइक्स हैं, तो हमें मेहनत करने के लिए फिर मोटिवेशन नहीं मिलता ना। सो आई वांट यू गाइस टू प्रेस दैट सो दैट वी रीच मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है कि नहीं, थोड़ा बहुत। ओके एवरीबॉडी, लेट्स सी। इस क्वेश्चन में आप लोगों को काफी झटका लग सकता है, तो ध्यान रखना। प्लीज रिमेंबर एवरीबॉडी, इस तरह के क्वेश्चन में एलेट में सबसे ज्यादा गलती होती है। मैं आंसर बताऊंगा तो समझ जाओगे। ओके चलो आंसर बताता हूँ। बहुत बढ़िया, गुड अटेम्प्ट एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट। तालियां मिलेंगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से बताओ कितने लोगों को लगा झटका 2000 वोल्ट का। यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या मैं एनएलयू के लायक हूं। बिकॉज एवरीबडी सेड द आंसर इज ए बट आंसर तो डी है। ये कैसे हुआ। अस्मिता आर्या, वेरी लेट आंसर, करेक्ट आंसर बट वेरी लेट आंसर। किसी ने इसके पहले भी करेक्ट आंसर दिया था, आई डोंट थिंक आई सॉ एनी। तो पहले बताओ कि सब झटका थोड़ा सा लगा कि नहीं लगा। ओके प्रियंका सेज हाउ इज इट, आई डोंट नो, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता प्रियंका। चलो उमेर इज वेरी सैड, चलो उमेर एटलीस्ट इज दिल से। उमेर आई डोंट नो, आई ही यूज करूँ शी यूज करूँ आई डोंट नो, बट इज थोड़ा उदास है ना, चेहरा बन गया है इमोजी में। चलो अब देखते हैं भाई इसका आंसर डी कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा जिंदगी में क्या हो रहा है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। ओके नाउ रिमेंबर, देखो मैं आपको सारा कुछ तो नहीं पढ़ा सकता अभी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आई कांट टीच यू एवरीथिंग अबाउट assumption in one session because this is a practice session, this is an approach session, this is a strategy session, this is not a regular classroom session। तो assumption का मतलब होता है belief of the author। ओके शॉर्ट में बता रहा हूं, belief of the author, करेक्ट। तो assumption का मतलब होता है what is it that the author believes is true। ऑथर इन ऑप्शन में से किसको सच मानता है, यही सवाल होता है ना। assumption का मतलब यही होता है। आपको पैराग्राफ एंड द स्टेप्स आई टॉक्ड अबाउट, यू हैव टू फॉलो दोस स्टेप्स आल्सो। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, what are the new terms in the conclusion, which option has the same terms or similar terms, and then negation if you require negation तो उसको भी यूज कर सकते हो। करेक्ट ओके अलिफिया दैट्स करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। तो देखो
assumption means belief of the author, first thing. और यहां देखो क्या लिखा है, मेड बाय द ऑफिस बेयरर्स, कह रहा है जब ऑफिस बेयरर ने जो भी फैसला लिया, वट एवर डिसीजन द ऑफिस बेयरर्स मेड, वॉट वर दे थिंकिंग, वॉट वॉज देयर बिलीफ, वो क्या सोच रहे थे सच है ना, वो क्या सोच रहे थे सच है। तो देखो, आई विल क्विकली एक्सप्लेन दिस। द इंडियन क्लासिकल डांस रिसीव्स मोर देन 1000 एप्लीकेशंस ईच ईयर, 1000 एप्लीकेशंस आते हैं। एसोसिएशन विशेस टू इंश्योर कंसिस्टेंटली हाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एट एवरी इवेंट, यहाँ पे ध्यान, पे अटेंशन हियर एवरीबॉडी। द एसोसिएशन विशेस टू इंश्योर consistently high standard performance at every event, हर इवेंट पे they want to ensure the same quality. The office bearers have decided to accept for its annual festival only the best 100 performers based on the review of their performance in the press and media. Pay attention to the last two lines, everybody. They want to ensure consistently high standard performances at every event. जहां भी इवेंट होगा ना, they want to ensure the same level of quality. Okay, and because of that they have decided they will take only the 100 best. Now pay attention everybody, the conclusion talks about the 100 best, correct? 100 best is the new term, this is the new term in the conclusion. So the author talks about quality, author talks about 100 best performers. There is a link, this link ideally should be there in the assumption, correct? तो पहले ढूंढो कहां पे 100 best performers, it's in option D. Now you have a doubt whether it is the correct answer or not, no problem, use negation. The best 100 performers selected each year will not be of the same standard from year to year. If the 100 performers will not be of the same standard, then can these guys ensure consistently high standard? अगर इन 100 लोगों का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहा हर साल, तो क्या कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? This whole idea will become defunct. Understood everyone? I will come to option A also, don't worry. ऑप्शन ए भी आऊंगा, बट पहले बताओ समझ आया? थिंक फ्रॉम द ऑफिस बेयरर्स पर्सपेक्टिव, क्या सोच के वो कह रहे हैं कि हम 100 ही लेंगे? वो ये सोच रहे हैं कि ये 100 जो है ना, वो कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, यही सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? इनका स्टैंडर्ड ऊपर नीचे नहीं होगा। नाउ सपोज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर लाइक नहीं, माय आंसर इज ए, नो प्रॉब्लम, यूज नेगेशन इन ऑप्शन ए। द एसोसिएशन कैन नॉट एक्सेप्ट, कैन नॉट को कर दो कैन। Association can accept all the applications it receives for its various festivals. If it can, तो फिर ये कंक्लूजन में 100 की बात क्यों कर रहे हैं? Right? Is there any relation with the conclusion about 100? Assumption is always related to the conclusion. Second, have you guys noticed that this statement, option A, is actually an inference from the first statement, yes or no? ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट से इन्फ्रेंस निकाल रहे हो। 1000 एप्लीकेशन आते हैं और उन्होंने 100 का फैसला किया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो सबको नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, तो इन्फ्रेंस है, assumption कहां से हो गया? That is why assumption must be studied once. If you guys are still in doubt, please study once. I cannot really teach you everything right now, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक बार जाके पढ़ लो। We have done enough classes on assumption. You can watch those classes. You can download the app. There are sessions available there also. But it's a very critical concept. I hope it is clear now. अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जरूर पुराने वीडियोस देख लेना। Yes or no? समझ में आई बात? और अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आ गया आपके पास, क्या कह रहा है ये? कंक्लूजन का बेसिस निकालने को कह रहा है, कंक्लूजन का बेसिस। ओके, दिस क्वेश्चन ऑन अ स्केल ऑफ 10 वुड बी 6। एवरेज से थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, बट आई थिंक यू गाइस कैन मैनेज, तुम लोग ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ट्राई करके देखो।
यस एवरीवन, जल्दी से बताना। ओके, आंसर क्या है? श्लोक अग्रवाल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नो नथिंग लाइक दैट। चलो, आर्या, आर्या says D. I'll wait for others. 5 more seconds, everyone. Umair B. Okay. Umair's answer is B. Priyanka's answer is D. I'll wait for 5 more seconds. तो his answers आ जाएं, है ना? Basis of the conclusion. Remember, guys, basis of the conclusion means assumption. This is basically an assumption question. D D D D B D D D D D. Okay, let me ask कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी बताइए भाई, बच्चों का आंसर बताइए, खुश करिए उनको। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली डी फॉर दिल्ली। नाउ कैन यू डू इट वेरी फास्ट? यस, हाउ डू यू डू इट फास्ट? Serious artists enter their field with the goal of art for art's sake and accept artists with similar goals. Correct. Therefore, when artist becomes famous by popularizing art and making their art accessible, most of their contemporaries conclude that they should not longer be counted as true artists. If you paragraph is saying if you make the art popular, you are not a true artist. है कि नहीं? Now, this is what the conclusion is, and first line says serious artist enter the art for art's sake. जो सीरियस है वो तो आर्ट के लिए आर्ट का काम करता है, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करता। तो क्या मानते हैं? व्हाट डू दे बिलीव? दे बिलीव समथिंग अबाउट पॉपुलैरिटी, आर्ट, ट्रू आर्ट and art for art's sake, right? If I ask you what is the new term is popularity, true art, in the conclusion दिख रहा है ना ये सब? ऑप्शन चेक करो, which option has all this? Option D only. The artist who popularizes art and cater to masses do not pursue the goal of art for art's sake. True artist, art for art's sake जो करेगा उसी को true artist बोलेंगे ना? So there is some connection here. Now, if you think I'm not sure is the D answer, check it. Use negation. The artists who popularize art and cater to the masses do not pursue. Now look at this, everybody. Pursue the goal of art for art's sake. Just imagine if I just take out do not here. ध्यान से देखो, if I take out do not here, you will notice that this is attacking this argument directly. ऊपर लिखा है जो पॉपुलैरिटी के लिए करता है वो आर्टिस्ट ही नहीं होता। ये कहता है जो आर्टिस्ट पॉपुलराइज करता है वही आर्टिस्ट ट्रू होता है। दैट आर्टिस्ट इज डूइंग इट फॉर द आर्ट सेक। एग्जैक्ट ऑपोजिट। इससे आसान क्वेश्चन कैसे बनेगा? दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी डुएबल, राइट? सूरज खत्री, असम्पशन रिवाइज करो, बहुत जरूरी है। इट लुक्स लाइक तुमने पहले क्लासेस नहीं की हैं इसकी, या ज़्यादा नहीं की होंगी, या शायद प्रैक्टिस कम है, व्हाटएवर, बट रिवाइज कर लो, बहुत ज़रूरी है। अभी देख लिया ना लास्ट ईयर 13-14 क्वेश्चंस फ्रॉम अजम्पशन, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको इट्स वर्थ पेइंग अटेंशन टू। दिस इज फ्रॉम AILET 2011 एवरीबडी। तो मैं क्या बोलूँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 6 out of 10 टाइप। Let me see who gives me the first correct answer. Assumption बताना है।
Riya Verma, Sakshi Patil, they are saying the answer is A. Okay, क्या बात? Arya says A. अमन पराशर, अमन भी आया है आज, बहुत बढ़िया. अलिफिया ए, क्या बात? You guys, I think, have got it. So see, if you have done enough classes, no, if you have worked hard, कोई रोक नहीं सकता. मक्खन है ना. करेक्ट आंसर ए है एवरीवन. वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैंने पहले ही बताया. सी, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? चेक द न्यू टर्म इन द कंक्लूजन. देयरफॉर लिखा है ना, कंक्लूजन है. सूरज खत्री, ध्यान दो. देयरफॉर मतलब कंक्लूजन. क्वालिटी इज अ न्यू टर्म. देखो ये पहले नहीं लिखा क्वालिटी कहीं पे, है ना. सो आइडियली दिस न्यू टर्म शुड बी इन द कंक्लूजन. अब देखो किस ऑप्शन में क्वालिटी है. क्वालिटी यहां पे है, क्वालिटी यहां पे है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं. दो आउट हो गए. ओके, अब क्या करना है? जस्ट यूज द निगेशन पार्ट. दोनों में नॉट लगा के चेक करो कौन सा अटैक कर रहा है ना. प्लम्पर बीन्स डू नॉट इनहेंस द क्वालिटी. यहां लिखा है क्वालिटी अगर चाहिए, अगर क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्री सोक्ड बीन्स मत यूज करो, है ना. क्वालिटी ऑफ द डिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नीड टू कुक दैट डिश क्विकली. क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बीन्स को प्री सोक मत करो. अब आपको चेक करना है कि इज इट अटैकिंग दिस आर्ग्यूमेंट व्हेन यू ऐड डू नॉट और नॉट. बस ये चेक कर लो, है ना. आप अगर इसमें डू नॉट लगाओगे यू वुड नोटिस दैट इट इज अटैकिंग द आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली, देयरफॉर इट इज द करेक्ट आंसर. बस इस तरह से करना है. क्वालिटी की बात है यहाँ पे, क्वालिटी के बाद कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यानी आउट आउट, राइट. फिर दोनों में नॉट लगाओ, फिर चेक करो कौन सा अटैक कर रहा है. दैट्स इट. कुछ नहीं करना, यहां शुरू करना है और धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट लानी है. करेक्ट. थैंक यू अमन. अगला सवाल भाई. हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो कुछ क्वेश्चन भी तो करने होंगे ना. Therefore, I'm going faster. Now, another question on assumption, everybody. Assumption बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगला सवाल जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर. So right now, what I can see is I can see 48 people are watching it live, and the number of likes is like very few. So can I expect you guys to quickly do the liking part? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं नंबर ऑफ लाइक्स. तो जल्दी से जरा करके बताना. देख रहा हूँ इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं नंबर्स में. हाँ, हो रहा है, हो रहा है. लगता है मेरा थ्रेड काम आ रहा है. हो रहा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जल्दी बताओ आंसर. लेट मी सी हु गिव्स मी द फर्स्ट करेक्ट आंसर. 5. आर्या सेज सी. ओके. अरे लाइव चैट कहाँ गया? भाग गया? नहीं, आ गया. वेरी गुड, क्या बात. बहुत बढ़िया. I was 100% sure that this question would be answered correctly by every student in the class. मुझे पूरा यकीन था इस बात पे, है ना. Because you guys have done a lot of legal reasoning questions also ना. ये थोड़ा थोड़ा legal reasoning टाइप भी है. तो मुझे पूरा यकीन था इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तुम लोग पक्का करेक्ट आंसर दोगे. करेक्ट आंसर इज सी. बैकग्राउंड से थोड़ा फायदा होता है, अगर आपको नॉलेज है चीजों की तो थोड़ा फायदा होता है. बट रिमेंबर गाइस, यू कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट क्वेश्चंस टू come from your own knowledge area, but yes, it can help. Everybody has got the correct answer, therefore I'm not explaining this, है ना. Okay, let's try again. I expect 90 plus correct answer, 90 plus percent correct answers in this question. Okay, 90 plus percent. दिखा दो आज दुनिया को कि टॉप 3 में तुम ही जा रहे हो. जल्दी से. 90 प्लस परसेंट चाहिए इसके अंदर. हाँ, Saida says yes sir, absolutely. रिया वर्मा, यस यस, अभी आता हूँ.
सेंड मी द आंसर फॉर दिस एवरीबडी एंड देन अनिल तुमने इसका आंसर भेजा है सी किसका आंसर भेजा आई थिंक राइट आई थिंक सो Alifia's answer is A. Okay, I will have to wait. Ayush answer A. Arya answer A. Riya A. Hariom A. अरे everybody is saying A. क्या बात बहुत बढ़िया. तो पूछ ले कंप्यूटर जी से भाई बताइए करेक्ट आंसर क्या है बच्चे तो A कह रहे हैं तो कंप्यूटर जी ने कहा कि सब A कह रहे हैं तो A ही होगा. नाउ रिया वर्मा said sir is there any trick for inference? No trick for inference actually, but let me tell you two things about inference. I have talked about it earlier also. I have talked about 11,565 times about this in my previous sessions. So if you have done my previous sessions, you probably already know, but I'll repeat anyways. Whenever you are doing inference questions, okay, inference questions, two things are important. One is inference is a likely to be true statement. Okay, it is a statement which you are very sure is going to be correct, but you are not probably 100% sure. Conclusions are certain, inferences are likely to be true, therefore inferences are also called minor conclusions. Okay, critical reasoning की books पढ़ोगे उसमें inferences को minor conclusion बोलते हैं. But if you go by dictionary meaning, then inference is basically a conclusion, but inference is a type of conclusion actually. Second thing, inferences can be rephrasing of statement. मैंने कल ही बताया था, आई थिंक आई टूक अ सेशन डे बिफोर यस्टरडे, मैंने उसमें बताया था inference can be rephrasing. Rephrasing means what? Ram is alive. Inference can be Ram is not dead. Earth is round. Inference can be Earth is not flat. You understand? Rephrasing. India's population is 140 crore. India's population is not less than 140 crore. India's capital is New Delhi. India's non-capital is not New Delhi. कुछ भी. Rephrasing can be inference. Ram has only one son called Mohan. Ram has no daughter. तो लोग बोलते हैं only son means no other child. Yes, but this is also inference. You are rephrasing it, but inference है. Now everybody, if you understand that, tell me quickly, is this not a rephrasing of the statement from this line? समझ में आ रही बात मेरी क्या कह रहा हूं? Children in general and little children in particular do not suffer from severe diseases. And obviously if you look at the paragraph, this entire COVID-19 has been called a serious disease, है ना? This line actually has been written again. ये तो यही लाइन वापस लिख दिया उसने एग्जामिनर ने, है ना, दोबारा लिख दिया. But this is an inference. Riya Verma, is it clear? Inference, if you study, if you attend one of my classes, I have taken a lot of classes on YouTube. You watch those classes. I have told in those classes in more comprehensive manner that inference can come from any part of the paragraph. Conclusion is the focus of the paragraph. Inference can come from any part of the paragraph. This inference is actually coming from this part, yes or no? सिर्फ इस पार्ट से आ रहा है. तो you can ask what is the role of this part? कोई रोल नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए रखा है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, ताकि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ताकि तुम किसी अच्छे कॉलेज में ना जा पाओ. यही इसलिए रखा हो. क्यों रखा है? Inference can come from a part of the paragraph also. In fact, they come from part of the paragraph. I hope this is a good idea about inference, everyone. Yes or no? Let me know in the chat box. समझ में आ रही बात? चलो अमन पराशर बताता हूँ, पहले पढ़ता हूँ तुम्हारा मैसेज में. यू गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन. मैं तब तक अमन का मैसेज पढ़ता हूँ. बड़ा सा मैसेज भेजा है, क्या लिखा है भाई? अमन, दैट मीन्स आप शॉर्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हो. अगर शॉर्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे
तो तुम्हें स्पेशली एलेट जैसे एग्जाम में दिक्कत होगी। ओके, तो शॉर्ट पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ट्राई करो। प्रियंका, दैट्स करेक्ट। आरजू आरजू चल चलाना, the statement you have written is not correct, Arju. No, Arju, no. All A's are B means no A is C. Nah, you can't say that, right? All A's are B means all A's are B. इसका एक ही मतलब होता है कि सारे A B हैं। You can also further say that some A's are B's and some B's are A. But all A's are B अगर मान लो true है तो all no A's are C कोई रिश्ता ही नहीं है। It's understand like this. All Indians are humans. Correct. All Indians are humans. तो कह सकते हैं कि no Indians are potatoes और no Indians are चपातीस और no Indians are elephants। क्या पता हो, क्या पता हम में से कुछ लोग चपाती हैं, नहीं है शायद, बट क्या पता, लॉजिकली है ना, लॉजिक में सब होता है। तो ध्यान रखना आरजू, आई होप इट इज क्लियर। चलो भाई देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आ गया। सब चिल्ला रहे हैं सी 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 सी, बट स्नेहा का आंसर इज डी, एवरीबडी एल्स इज सेइंग सी। क्या बात, तुम सब या तो हो गए हो समझदार या हो गए हो जीनियस। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए प्लीज। अरे वाह, ये तो सी है। नाउ अगेन एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। समझ में आ रहा है इन्फ्रेंस क्या होता है? देखो कितना बेवकूफ बनाते हैं इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में, है ना। लास्ट लाइन पढ़ लो, इसी लाइन को चिपका दिया है और इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़वा दिया। दिस इज व्हाट इज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस कैन कम फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, इट कैन बी रीफ्रेजिंग, है ना। राम मेरा दोस्त है मतलब राम मेरा दुश्मन नहीं है, समझे दया, एसीपी प्रद्युम्न फ्रॉम सीआईडी। फुल मजे लेते हैं इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में एग्जामिनर्स। इतना बड़ा पढ़वा के एक लाइन से क्वेश्चन बना देंगे, हो गया। बट व्हाट कैन वी डू, वी डू नॉट नो विच लाइन इज इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू रीड एवरीथिंग, है कि नहीं। क्या करें, सह लेंगे थोड़ा। एक बार एनएलयू चले गए तो कोई नहीं, फिर क्लैट थोड़ी देना है, इट्स ओके, है ना। अमन ओके, मुझे लगा उल्टा, कोई बात नहीं। इसका मतलब है प्रोबेबली अमन यू नीड मोर प्रैक्टिस, दैट्स इट, है ना। अमन आई ऑल्सो थिंक जब तुम एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो तो शायद तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लूज होता होगा या तुम्हें एक साथ पढ़ने में दिक्कत आती होगी और इस वजह से तुमने बड़े पैराग्राफ प्रैक्टिस ही नहीं किए शायद, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि तुमने बड़े बड़े पैराग्राफ कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो इस वजह से इंप्रूवमेंट नहीं आई है ज़्यादा। ओके, कैन टेक टाइम बट हो जाता है। प्रियंका एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। इन्फेरेंस का काम ही यही है, टाइम वेस्ट करवाते हैं। इन्फेरेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाते हैं बिकॉज यू डू नॉट नो which line will lead to an inference. Conclusion questions are easy. We know the answer will come from the paragraph. Inference में कहीं से भी more time consuming. Okay, let me check the answer. Arzu okay? Because AILET में बहुत जरूरी है ना syllogism, okay? That is why I was concerned. Arya says C, Ayush C, C for sure, Hariom C, Alifia C, Ayush Singh C. Techno wizard, it is basically lack of concentration, nothing else. Remember guys, if you read something twice, you lack concentration, nothing else. Just think for a while, when your friends WhatsApp you a long message, if that friend is important, under quote, do you ever read the message again? Very unlikely. एक बार में समझ जाते हो, है ना, एक वर्ड पढ़ के समझ जाते हो अंदर तक, डेप्थ पूरा, it's the interest. But if a passage is written by Shashi Tharoor about the pollution in Brazil, तो concentration कहाँ से आएगा, है ना। So it's about concentration. Techno wizard, okay? C. चलो भाई सब C कह रहे हैं, आंसर खत्म करो C मार्क करके। क्या बात, बहुत बढ़िया। Inference.
right? Read the last few lines. India and Vietnam are still powered by coal. The difference is they are making much more efficient use of it. इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. लिखा है और इसी को घुमा के यहां लिख दिया. एंड दिस इज इन्फेरेंस. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ी लिखा है. इट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हियर. अग्रीड, बिल्कुल सही बात है. बट लुक एट इट. ये तो हद हो गई. इसी बात को आपने चिपका दिया और बोला ये आंसर है. हाँ जी आंसर है. बिकॉज इन्फेरेंस इज अ डिडक्शन you can draw from the information given. It can be a rephrasing also. Yes, absolutely. I hope the meaning of inference is getting clearer to those of you who are not clear. If you're watching me after the session, then also the same thing applies, correct? Now, what is the conclusion, guys? Conclusion is based on the entire paragraph. So inference is a different ball game. Inference काफी different होता है. Conclusion काफी different होता है. ज़्यादा question नहीं बचे everyone. Don't go anywhere. Just stay with me for another 3-4 minutes, and this should be all. After that, some important information. Yes, please. Saida, thank you. Let's see what's the correct answer, everyone. This question can be a little hard, okay? So ध्यान से. I will explain it also. Don't worry. थोड़ा सा ध्यान से करना. प्रियंका, thank you so much. विकी कहाँ थे भाई तुम? हैं आज छुप के बैठे हुए थे. Vicky says A. Okay. Let's see. Alifia says D. This question is not easy, okay? It's अभी actually this question was listening to the previous questions बेइज्जती, okay? पिछले question की बेइज्जती होगी ना, तो ये question थोड़ा टेंशन में आ गया. लेकिन अच्छा भी बताता हूँ, रुक जा. D D D B B B C A B. Okay. B C. I'll tell you the answer in 10 seconds. देखो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, डिनर का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है. C B C. Okay. I will tell you the correct answer. थोड़ा सा झटका लग सकता है, थोड़ा सा, बट सीखोगे जरूर इस क्वेश्चन से, गारंटीड. ओके, तो आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा. एंड सम ऑफ यू गॉट इट राइट ऑल्सो. आई कैन सी स्मिता गॉट इट राइट. फिर प्रियंका, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन. मैं समझाऊंगा ये क्वेश्चन, गाइज, डोंट वरी एट ऑल. दिस क्वेश्चन इज हार्ड, आई थिंक सो. रिया गॉट इट राइट, आई थिंक. या, वेल डन, गाइज. नाउ आई विल क्विकली एक्सप्लेन. This mosquito has been after my life. Now remember, inference and conclusion are different things, okay? So first understand what is a conclusion. Conclusion is the main point of the author. Whenever you are doing a conclusion question, please remember, guys, whenever you are doing a conclusion question, two things are very important. First, understand that details are given to support the author's main point. What is the role of details? Details are there to support the main point. Correct? Now, let me number the statements, okay? 1, 2, 3. If you got the answer wrong, no problem. भूल जाओ. Okay? इसको बुरे सपने की तरह भूल जाओ. X की तरह भूल जाओ. And statement 1, 2, 3. Read all of them and tell me किसके बिना. only 4 statements actually, my mistake. 1, 2, 3, 4. इन चारों को ध्यान से पढ़ो everyone. Read all of them one by one and tell me which one do you think is mandatory for the paragraph to make sense. किसके बिना पैराग्राफ का सेंस नहीं निकलेगा, या कौन सा स्टेटमेंट पैराग्राफ की जान है, कौन सा स्टेटमेंट पैराग्राफ का हीरो या हीरोइन है. ओके, पढ़ के देखो. या यू कैन थिंक लाइक दिस, which one is fact, which one is opinion. You can do this also. ध्यान से देखो और बताओ कौन सा फैक्ट लग रहा है, कौन सा ओपिनियन लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट स्टेटमेंट 2. द रिपोर्ट्स आर टेलीकास्ट ड्यूरिंग प्राइम टाइम. ये तो इन्फॉर्मेशन है ना, कि रिपोर्ट जो है वो टेलीकास्ट होती है प्राइम टाइम पे. फैक्ट है, ठीक है. न्यूज़पेपर्स गिव बिग हेडलाइंस एंड फ्रंट पेज कवरेज टू लोकल क्राइम एंड लोकल न्यूज.
फैक्ट लग रहा है। समटाइम्स वन पर्टिकुलर लोकल न्यूज आइटम गेट्स डे लॉन्ग कवरेज, ये भी फैक्ट लग रहा है। तो ऑथर ने फैक्ट बताया है, क्या इसमें कुछ ओपिनियन नहीं दिया, ऐसे ही लिख दिया। नाउ रीड स्टेटमेंट वन। people tend to give importance people tend to give importance to a news item based on where, how, and how often it is presented in the media. Correct? Now, if you don't get this line correct, you will not understand the answer correctly. इस लाइन को ध्यान से पढ़ो and tell me everybody जल्दी से, do you all agree this is an opinion? Yes or no? And have you guys noticed the word may here in the option? Author is not saying it is 100% sure, but it is likely to be true, है ना, मतलब author may वो लिख रहा है वहाँ पे। Statement 1, 2, 3, statement 2, 3 and 4 are basically facts. ये वाला fact है, ये वाला भी fact है, ये भी fact है। Opinion तो first में है। Now read these 3-4 words ध्यान से, इनको जरा ध्यान से पढ़ना एक बार everybody, you'll understand the answer. People tend to give importance to a news item based on where, how and how often it is presented in the media. क्या मतलब इसका? What is the author's main point? Author's main point is that whatever news item you are giving importance to, तुम्हें जो भी लग रहा है ना important है news, हो सकता है वो important ना हो, but how often, where it has happened and how it is presented in the media is making it important. हो सकता है वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं वो गुफा जहां से हमारे पूर्वज स्वर्ग जाया करते थे, राइट। आइए आपको दिखाते हैं उड़न तश्तरी जिसने गाय को किडनैप कर लिया। You might think it's a very important news. Why? Because that's the way media is presenting. This is the author's main point. Now read options one by one. The language used in newspaper headlines about local crimes is sensational and bombastic. Read the paragraph everybody. Is it about newspaper? Correct? Not really. The coverage of international events in newspaper? Not really. The TV, option D talks about TV. The TV is more partial to local crime stories as the TRPs for such stories are high. Is the author talking about all this? No. Then what is the correct answer? So correct answer is C. And more importantly, tell me everybody, did you notice that option A and B talks about newspaper, but the paragraph is not really talking about newspaper? वो आपने मान लिया, but वो news सिर्फ, remember I'm not saying न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा है, I'm saying न्यूज़पेपर की ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। The paragraph is talking about media, then it talks about newspaper, but option A and B are talking only about newspaper, and therefore it's very clearly wrong answer. This was not really a tough question, but yes, hard question, especially if you don't pay attention. Understood? Yes or no? Did you like the question? Yes or no? समझ आया नहीं आया जो भी है जल्दी बताना चैट में, और फिर हम चलते हैं आगे। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में वो न्यूज़पेपर पे ही फोकस कर रहे हैं, यू मे नॉट हैव नोटिस्ड। ऑलराइट एवरीवन, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, काफी ज्यादा टाइम हो गया। अगला सवाल निकोल के बारे में है, जल्दी बताओ। ये काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान है, सो आई एक्सपेक्ट 95% करेक्ट आंसर। Remember guys, in this question you need to eliminate well. Eliminate नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ओके? थोड़ा सा मिसलीडिंग आंसर हो सकता है। Just pay attention to the words in the options, आराम से आंसर निकलेगा। Just eliminate, you'll get the right answer. Saida, that's correct, absolutely. Sanidhya, I think that's what your name is. Sanidhya,
Okay, when you do only PYQs, Sanidhya, then you should not worry basically because CLAT has changed drastically since 2020. Okay, so maybe because you have not prepared enough for the pre 2020 kind of paper, that is why your PYQs are not very good. But it's okay. If you're doing good in the mocks, you're doing fine. Relax. बी हाँ, मुझे 100% यकीन था कि ट्रैप में फंसने वाले लोग यही ऑप्शन मार्क करेंगे, तो मुझे काफी खुशी हो रही है अंदर। मैं चेहरे पे नहीं आने दूंगा, आई विल कीप अ पोकर फेस, बट मुझे दिख रहा है कि तुम उसमें ही फंस रहे हो जिसमें मुझे उम्मीद थी। बहुत बढ़िया, बी। चलो सबके सब आ गए, है ना, बहुत बढ़िया। मतलब आंखें बंद करके पढ़ना इज वन ऑफ योर हॉबीज आई थिंक गाइस, यस और नो? प्रियंका, कम से कम तुम कंफ्यूज तो हो, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। चलो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा झटका दे ही देता हूं, है ना। करेक्ट आंसर इज डी। चलो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन बी। ब्रिजेस वर यूज्ड टू इवैक्यूएट पीपल टू सेफर प्लेसेस। जरा इसे ढूंढते हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने बी आंसर मार्क किया है। Authorities in Volusia County ordered evacuation ahead of the storm and closed bridges as they assessed the damage. Any idea about whether the bridges were used to get people out or not? Multiple coastal. All bridges to the beach side have been closed to all but essential personnel and a curfew was put into effect. कहां से आ रहा है ये? इमेजिन कर लिया, तूफान आ रहा है, ब्रिजेस से लोग भाग रहे हैं, ब्रिज पीछे से टूटता जा रहा है, हॉलीवुड मूवी है ना, ऋतिक रोशन इन मोहनजोदाड़ो। मुझे बस समझाना जरा, किधर मिला ये ऑप्शन बी, किधर से इन्फ्रेंस निकाला? क्योंकि हो सकता है माई रीडिंग स्किल्स आर नॉट अप टू द मार्क, मैंने कुछ छोड़ दिया हो, प्लीज बता देना, कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से? हो सकता है ना, क्यों भाई, इंसान गलती कर सकता है। सो प्लीज जल्दी से बताओ किधर छूटा। मुझे तो मिला नहीं, तुम लोगों ने शायद कोई स्पेशल गॉगल्स लगा रखा है, 3D गॉगल्स, है ना। चलो now Arzu says why not C? चलो Arzu, that's a good question at least. Option C says no person, look at the extreme word, no person can enter or leave Volusia country now. Arzu, Volusia country ordered evacuation, and then it says evacuation has been ordered. मतलब what? People have been asked to leave the place. I'm not sure about who is there, but how do you know nobody can enter or leave? लॉकडाउन थोड़ी लगा है, चाइना थोड़ी नहीं है। Secondly, maybe based on the information in the paragraph, maybe some people who are essential personnel, for example doctors or firefighters, they might be there. तुम्हें कैसे पता कि nobody can enter or leave? Where is the information? है, मैंने पहले ही बोला एलिमिनेट करो ना। मर्सी ऑफ हरिकेन कहां से भैया? नाउ लेट मी टेल यू व्हाई यू गाइस डिड नॉट मार्क दिस। ओके, मुझे बताना जरूर। तुम में से कुछ लोगों को लगा होगा ये तो अजम्पशन है यार, ये कैसे इन्फ्रेंस हो सकता है। इफ यू थॉट सो, आई एम विद यू। अगर तुम्हें ऐसा लगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, बट मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको दिया जस्ट टू शो दैट यस, समटाइम्स an assumption and an inference may look similar, but if the other options are absolutely horrendous, absolutely senseless, then this can be considered an inference. Why? Because inference का definition क्या होता है? Inference is based on the information given in the passage. Based on the information given in the passage, can't you say that precautionary measures जो लिए जा रहे हैं उससे loss of life कम हो जाएगा? लगता तो है, इन्फरेंस इज लाइकली टू बी ट्रू, लगता तो है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी।
समझ आया एवरीवन? यस और नो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। तो अगर लगा है तो बहुत अच्छी बात है, बट आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो भाई आगे चलते हैं। तो आगे बता देता हूँ जल्दी से। 20th को यू हैव एलेट करंट अफेयर्स, डोंट मिस द क्लास, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स है। पार्ट 3 होने वाला है, सारे सर लेंगे 4 PM पे। एंड ऑफ कोर्स प्लीज डोंट फॉरगेट वी आर कमिंग अप विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एलेट ऑन December 11th। तो December 11 को हम जबरदस्त वाला एनालिसिस लेके आने वाले हैं, फुल ऑन। तो डोंट मिस इट, अभी से अलार्म वलार्म लगा लो, भूलना मत। एंड इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड आवर very premium 9000 plus question test series 45 mock वाले, तो आई डोंट नो व्हाट आर वेटिंग फॉर, प्लीज डू इट। हम ऑल इंडिया ये आप कर चुके हो, एंड यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद अस through our media, social media channels, right? So thank you so much everyone for joining. I really enjoyed the session. If you did enjoy, if you liked the content, please press the like button, press subscribe, and also the bell icon. देखो तुम लोग लाइक वाइक करते हो तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, फिर मेहनत करने का मन करता है, वरना काफी लेजी लेजी लगता है ना? सो प्लीज डू इट विदाउट फेल। आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, वर्क हार्ड, and go to the best college you can go to. Bye bye, thank you.